Let's start with amblyopia, and the definition given in Chitoi is interesting, but it's not that clear, so I've used a better definition over here. Amblyopia is defined as a functional reduction in visual acuity caused by abnormal visual development early on in life. So in this singular definition, a lot of important elements are hidden. First of all, amblyopia has been described as a functional reduction as opposed to an organic one. And the reason for this description is the fact that there is no identifiable organic cause in the eye or in the visual pathway in someone with amblyopia. This is why amblyopia is defined as a functional reduction in the visual acuity, because on physical examination there is no cause, there is no organic cause in either the eye or in the visual pathway. First point. Second point, the development of this condition has something to do with early visual development. So this definition contains all of the crucial points in a manner which is easy to digest. The second important point to understand is that this disorder is predominantly unilateral, meaning in most cases it will affect one eye, but occasionally both eyes can be affected, a condition called bilateral amblyopia. Anyways, moving onwards to the next critical concept. So there is a period of visual cortex neuroplasticity in which the visual links, the neuronal links, are labile, they're still getting formed, they can be changed. And so this period of visual cortex neuroplasticity, it basically coincides with the critical period during which the visual system can be affected by outside influences. Okay? And this most sensitive period is the first 6 months of life. यानी पहले 6 महीने जो होते हैं ना, till the child is 6 months old, that is the period जिसमें visual cortex most plastic होती है और जिसमें visual system सबसे आसानी से affect हो जाता है by some external influence. ठीक है ना? लेकिन वो period जिसमें visual deprivation can lead to amblyopia extends for a longer period of time. ठीक है? पहले 8 से लेकर 9 साल में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो amblyopia डेवलप कर सकता है. ठीक है? Now let's talk about the classification of amblyopia, because this will really hammer in the important concepts. 3 main classifications हैं: strabismic amblyopia, refractive amblyopia, ठीक है, and deprivational amblyopia. The last one is the most severe basically. So in strabismic amblyopia, there is misalignment of the two eyes and therefore fusion is not happening. And so the fovea of the two eyes, they are presented with 2 different images which are not fused. Okay? So in order to prevent diplopia, visual cortex suppresses the image from one eye, and that is what leads to the development of amblyopia if this suppression is allowed to continue for a prolonged period. इसको हम कहते हैं strabismic amblyopia. This is the first type. The second type is refractive amblyopia. Chitoi में they've called it image blurring from refractive error. ठीक है? Refractive error can be a cause of amblyopia. Refractive error can be a cause of functional decrease in visual acuity in one or both eyes. ठीक है? In a person who develops an isometropic amblyopia. What is an isometropic amblyopia? ठीक है? ये वो लोग डेवलप करते हैं जिनकी दोनों आइज अफेक्टेड होती हैं. बोथ आइज हैव रिफ्रैक्टिव एरर, बट द रिफ्रैक्टिव एरर इज अनइक्वल. एक आई में ज़्यादा रिफ्रैक्टिव एरर होता है कंपेयर टू द अदर आई. ठीक है? सो द इमेजेस ऑन बोथ द फोवियाज हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्लैरिटी. तो जिस आई में ज़्यादा रिफ्रैक्टिव एरर होता है उसकी इमेज बेसिकली गेट्स सप्रेस्ड. सो द आई विद द ग्रेटर रिफ्रैक्टिव एरर, the image formed on its fovea basically gets suppressed, and because of that
suppression, there is a development of unilateral amblyopia known as anisometropic amblyopia. Anisometropic is basically referring to the pathogenesis. There's another condition which we refer to as bilateral amblyopia or isometropic amblyopia. So the first one was anisometropic amblyopia, which means that the refractive error was unequal, whereas isometropic amblyopia means that the refractive error in the two eyes is the same or similar. Okay? So if the refractive error in the two eyes is the same, or if it is similar, meaning there is isometropic condition, why would there be development of amblyopia? Okay? Let's not think about it too much. बस ये याद रखना है कि बायलैटरल एम्ब्लायोपिया तब होता है जब दोनों आइज़ में सिवियर किस्म का रिफ्रैक्टिव एरर होता है, सिवियर किस्म की ब्लर्ड इमेजेस बन रही होती हैं, इवन दो दोनों आइज़ में एक ही जैसी इमेजेस बन रही होती हैं. जबकि एनाइसोमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया में जो रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं उनमें डिफरेंस होता है एटलीस्ट 1 डायोप्टर्स का. ठीक है, जबकि आइसोएमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया में सिवियर रिफ्रैक्टिव एरर होता है दोनों आइज़ में. ठीक है. थर्डली एस्टिग्मेटिज्म की वजह से भी एम्ब्लायोपिया हो जाता है. ठीक है. सो आई हैव नॉट मेंशन दैट ओवर हियर बट यू हैव टू रिमेंबर. और मायोपिया की वजह से भी हो सकता है बट मोर कॉमनली हाइपरोपिया की वजह से होता है. अच्छा, जो थर्ड कॉज है ना एम्ब्लायोपिया की इज़ डेप्रिवेशनल एम्ब्लायोपिया, जब एक आई में इमेज बन ही रही होती है सिंस बर्थ. Causes include congenital cataract, complete ptosis, congenital corneal opacity, vitreous hemorrhage. ये बहुत ही सेवियर किस्म का रिफ्रैक्टिव एरर. ठीक है, ये एक रूल ऑफ थंब है कि अगर दोनों आइज़ के विजन में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो ना तो एम्ब्लायोपिया इज सस्पेक्टेड. सो व्हाट डू यू सी ऑन हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन? फिजिकल एग्जामिनेशन में जब बच्चे की विजुअल एक्विटी यू नॉर्मली स्टार्ट एन ऑफ्थैल्मिक एग्जाम विद विजुअल एक्विटी. अगर दोनों आइज़ की विजुअल एक्विटी में 2 लाइन डिफरेंस है, जाहिर सी बात है 2 लाइन डिफरेंस कैसे होता है? इफ यू लुक एट अ स्नेलन चार्ट तो लाइंस बनी हुई होती हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल पहली 5 लाइनें बच्चे ने पढ़ ली विद 1 आई क्लोज्ड एंड विद द अदर आई क्लोज्ड उसने पहली 7 लाइनें पढ़ ली, मीन्स के 2 लाइन डिफरेंस है. सो दिस बेसिकली is something we base our diagnosis of amblyopia on, but इससे कम डिफरेंस पर भी amblyopia होता है. so this is not a hard and fast rule. Visual acuity. Second is crowding phenomena. ये pretty much specific है to amblyopia. उसमें ये होता है कि common characteristic amblyoptic eye की ये होती है. For example, अगर right eye किसी की amblyoptic है तो that person will have difficulty seeing or recognizing letters in a line when they are part of a line, but is better able to appreciate single letters in isolation. ठीक है, अगर एक सिंगल लेटर उसके सामने रखा गया है, साइज उसका वही है, डिस्टेंस भी वही है, तो उसको बेटर अप्रिशिएट कर पाएगा कंपेयर टू इफ दैट सिंगल लेटर ऑफ द सेम साइज एंड द सेम डिस्टेंस वाज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. ठीक है. सो आई विल रिपीट दिस. अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्ब्लायोपिक आई इज डिफिकल्टी इन डिस्टिंग्विशिंग ऑप्टोटाइप्स दैट आर क्लोज टुगेदर. Visual acuity often is better when the patient is presented with single letters rather than a line of letters. ट्रीटमेंट ये है, सबसे पहले ऑर्गेनिक कॉज को रूल आउट करना है. अगर कोई ऑब्स्टिकल है टू विजन, मसलन की कैटरैक्ट है तो उसको ठीक करना है. फिर रिफ्रैक्टिव, सेकंड पॉइंट ये होता है कि आपने रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट करना होता है. जितनी बेस्ट पॉसिबल करेक्शन होती है ना एम्ब्लायोपिक आई की, वो अपनी करनी होती है वाया स्पेक्टिकल्स. फिर आपने ऑक्लूजन करनी होती है. आपने नॉर्मल आई को ऑक्लूड करते हैं ताकि जो एम्ब्लायोपिक आई है ना वो फोर्स हो जाए टू बेसिकली डू इट्स जॉब. So this is basically amblyopia, a very important topic.